गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन जो है जीएसटी के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए उसको जो है वो मंजूर कर लिया है। अब ये जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा क्या? जीएसटी एक्ट में इसके लिए प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ था। सेक्शन 109 के अंडर इस ट्रिब्यूनल को बनाया जाएगा और ये एक तरह से जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जीएसटी से रिलेटेड उसको डायरेक्टली कोर्ट में लेके जाने की बजाय जो है पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल में ले जाया जाएगा। इसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगा और इसके स्टेट बोर्ड्स भी होंगे जो कि अलग अलग 2-3 स्टेट्स में जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में 2-3 स्टेट्स में जो है वो के लिए एक बेंच होगा। फिर ऐसे बहुत सारी जो है स्टेट्स के लिए एक एक बेंच बना दिया जाएगा ताकि जितने भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उस एरिया में उन बेंचेस को में कवर किया जा सके। 4 मेंबर्स होंगे इसके, 2 टेक्निकल मेंबर्स, 2 जुडिशियल मेंबर्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सेंटर और स्टेट्स रहेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं B20 कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने B20 कॉन्फ्रेंस को इम्फाल में होस्ट किया है। B20 क्या है? बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस। G20 का ही पार्ट है। बिजनेस कम्युनिटी की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें डेलीगेट्स G20 कंट्रीज़ के आते हैं। पहली बार ये कॉन्फ्रेंस साउथ कोरिया में, जब साउथ कोरिया ने होस्ट किया था G20 को 2010 में, तब होस्ट की गई थी। कोई सेपरेट सेक्रेटरीट तो नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई कंट्री G20 को होस्ट करती है तो उसी कंट्री में ये मीटिंग की जाती है। लगभग 100 बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स G20 कंट्रीज़ के इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट ने इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनको चेयर बना दिया है 62nd सेशन का। यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन जो है उसको हम सोशल कमीशन भी कहते हैं पहले, और ये जब से यूएन बना है तब से ही एग्जिस्ट करता है। यूएन इकोसोक को ये एडवाइस करता है, गवर्नमेंट्स को भी एडवाइस करता है ऑन ऑल सोशल पॉलिसी इश्यूज या फिर सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जो भी एडवाइस देनी होती है देता है। ठीक है, जब वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हुई थी कोपेनहेगन में 1995 के बाद, तो इसी जो है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को ही जो है वो फॉलो अप और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया था। ओरिजिनली इसके 18 मेंबर होते थे, बट अब इसके टोटल 46 मेंबर्स होते हैं और इसके मेंबर्स इकोसोक द्वारा ही जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेरको सॉफ्टवेयर, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर वेरको नाम से बनाया है जिसमें कि जीनोम सीक्वेंसेस को जो है अच्छी तरह से कंप्लीटली गैपलेसली जो है उनको रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तो ये यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ने बनाया है। कैसे काम करेगा? डिफरेंट जो डीएनए सीक्वेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अलग अलग तरह से जो है इमेजेस जनरेट करती हैं, कुछ स्मॉल कुछ हाई, लेकिन ये जो वेरको होगा ये हर तरह की इमेजेस को, हर तरह के पीसेस को इकट्ठा करेगा, कंपेयर करके असेंबल करेगा और कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर्स बना कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्यूरेट और कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर पाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट उसका ऐसा निकलेगा। इससे ऑफ कोर्स हम कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो मोर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वायु लिंक। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने एक इंडिजिनस वायु लिंक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि आप जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन कर पाओगे बेस स्टेशन के साथ। 2 एयरप्लेन्स या 2 से ज़्यादा एयरप्लेन्स या फिर 1 एयरप्लेन भी अपने बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन कर पाएगा। वायु लिंक प्लेटफॉर्म एक एडहॉक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने ही बनाया है। ये IRNSS का जो यूज़ करेगा और जो है जो एक दूसरे की, जो अब समझ लो बहुत सारे एयरक्राफ्ट इकट्ठे अगर जा रहे हैं तो उनमें इनक्रिप्टेड जो है वो डेटा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए उनको प्रोवाइड करेगा। इससे होगा क्या कि आपको पता लगेगा कि जो सामने अगर आप एयरक्राफ्ट कोई है तो वो आपके ही कोई जो है आपकी इंडियन एयरफोर्स का ही है, और रियल टाइम बेसिस पर आप प्लान कर पाओगे आपस में कम्युनिकेट करके। वेदर का डेटा भी जो है वो पायलट्स को ठीक से मिल पाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुखोई सुपरजेट 100। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने इंडिया को प्रपोज किया है कि वो सुखोई सुपरजेट सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाना चाहते हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये ट्विन इंजन रीजनल एयरक्राफ्ट है, सिविलियन एयरक्राफ्ट है। 2008 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी। मैक 0.81 इसकी स्पीड है। 98 पैसेंजर्स इसमें एक बार में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सूरज ड्रोन। ये टॉपिक आपके
सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ एरोस्पेस ने एक सोलर पावर ड्रोन जिसका नाम सूरज रखा गया है वो एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले किया है, और ये सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए काम करने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोनिक चिप, हर चीज़ से ये लैस है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 kg रहने वाली है, और ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ जारी आपकी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सबको जो है ये दिया जाने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइंडर डिवाइस, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे कि इवन टाइनीस्ट मोशंस ऑफ बॉडी भी जो हैं वो उससे हम पता लगा पाएंगे कि जो टर्की में जो डिज़ास्टर रिलीफ टीम्स जो ढूंढ रही हैं लोगों को आफ्टर अर्थक्वेक, वो पता लगा पाएंगी कि क्या कहीं मलबे में लोग दबे हुए हैं। तो इसका नाम फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस है, और ये माइक्रोवेव रडार सेंसर्स का यूज़ करते हुए सर्वाइवर्स को अंडरनीथ द रिबल जो है वो देखने की कोशिश करेगा। इवन ये ह्यूमन हार्ट बीट को भी जो है जो 30 फीट से नीचे दबी हुई है उसको भी डिटेक्ट करने में कामयाब है। ठीक है, अब ये ह्यूमन हार्ट बीट या सांस लेना ये सबको जो है वो 30 फीट मलबे के अंदर भी जो है वो डिटेक्ट कर सकता है और बताएगा कि यहाँ पर लोग जो है वो दबे हुए हैं, इनको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शिंकुला टनल, इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मंजूरी दी है शिंकुला टनल बनाने के लिए। 16,500 फीट की ऊंचाई पर नीमू पदम दर्चा रोड लिंक पर ये बनाई जाएगी, जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पर पड़ता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाने वाली है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख हमें इससे मिलेगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और हैवी वेपनरी भी जो है हम फॉरवर्ड एरियाज़ में लेके जा पाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोडोडेंड्रॉन्स, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन में हमें पता लगा है कि दार्जिलिंग और सिक्किम में मोर देन 1/3 टाइप ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स जो इंडिया में मिलते हैं वो वहीं पर 2 स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, दो एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स जो है वो टोटल 1000 स्पीशीज़ होती हैं उसकी। जनरली ये टेम्परेट रीजन्स ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखे जाते हैं। अल्पाइन रीजन्स, कॉनिफरस, ब्रॉड लीव्ड वुडलैंड्स, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और इवन ट्रॉपिकल जंगल में भी देखे जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लोकल लोकल लैंग्वेज में हम इसको लाली गुरास कहते हैं। नेशनल फ्लावर है ये नेपाल का, और इंडिया में भी ये जो उत्तराखंड है उसका स्टेट ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर परिक्रमा फेज़ 2, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने अनाउंस किया है कि सागर परिक्रमा का 3rd फेज़ सूरत से जो है गुजरात से शुरुआत होगी। ये बेसिकली एक परिक्रमा की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ या स्टेट फिशरीज़ ऑफिशियल्स द्वारा या फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, ताकि हम जो इतने भी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं, उनको उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर सकें और उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस बार ये जो 3rd फेज़ है ये महाराष्ट्र और गुजरात के जो है कोस्टल कम्युनिटी को जो है ये जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए किया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में लगाया जाए, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। 2 यूनिट्स ऑफ 700 मेगावाट कैपेसिटी के लगाए जाएंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के, जो कि इंडिजिनसली बनाए जाएंगे। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता क्या है? अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम इसमें एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर, नॉट नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, उसको एज अ कूलेंट और मॉडरेटर इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यक्षगान। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली जो है एक तरह से ग्रीफ जो है वो दिखाया है, क्योंकि यक्षगान प्लेबैक सिंगर जो है वो कर्नाटका के उनका जो है वो देहांत हुआ है। यक्षगान एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है जो कि कोस्टल कर्नाटका में जो है वो पॉपुलर है। रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक और सॉन्ग है। 15 to 20 एक्टर्स और एक भागवत जो मेन स्टोरी टेलर होता है वो इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें मोस्टली रामायण और महाभारत के जो है वो सीन्स होते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चंदे, हारमोनियम, मदाले, ताल और फ्लूट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स इसमें बहुत ही यूनिक और इलेबोरेट होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वो मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स में जो है दिल्ली में दिया है। ये लगभग 40 साल से ऊपर के जो है अप टू 40 साल के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। 2006 से दिया जा रहा है हर साल। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है।
ठीक है। सो जो भी मतलब जिनका भी म्यूज़िक, डांस और ड्रामा में जो है वो एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, आपको पता है, फेमस शहनाई म्यूजिशियन थे। सबसे पहली बार इंडियन रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में 1950 में उन्होंने ही परफॉर्म किया था। अब अगर हम संगीत नाटक अकेडमी के बारे में देखें तो इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन अब ये ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, सो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो 19 फरवरी को थी, उसको पे उनको जो है वो ट्रिब्यूट पे किया है। फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम थे, फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले रियलाइज़ किया था कि इंडियन के पास एक नेवल फोर्स होना ज़रूरी है। सेक्युलर रूलर थे, सारे रीजन्स को अकोमोडेट करते थे। विमेन के सपोर्टर थे, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अष्टप्रधान थे। ठीक है। उनको हम माउंटेन रैट भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास गरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स बहुत ही यूनिक थी। इनको अपनी जोग्राफी ऑफ लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पता था। रेड करना, एम्बुश करना, सरप्राइज अटैक करना एनिमी पर, उसमें ये बहुत ही महान थे। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी all these topics in English. So the first topic is GST Appellate Tribunal. This topic is important for your governance section. GST Council has recently accepted the GOM recommendations regarding the formation or constitution of GST Appellate Tribunal in the country. So already the GST Act in since 2017 provided for the constitution of a GST Appellate Tribunal, and under section 109 this will be a specialized appellate authority which will be resolving disputes under the GST laws. GST tribunal will have a principal bench in New Delhi, but other benches will also be there. So for example, for northeastern states, one bench would be made for 2-3 states, and the principal bench and the state board would also have 2 technical and 2 judicial members, and equal representation would be there from center and states. All 4 members would not sit at once for hearing each case. Of course, it would depend upon the threshold and value of the dues involved in the dispute. So the next topic is B20 conference. This topic is important for your international relations. Manipur CM has recently hosted a conference of B20 in Imphal. So this B20 is business 20 basically. It is a part of the G20 summit, and it is a voice of business community of G20 countries. So delegates from G20 countries participate in this conference, and the first one was held in South Korea when South Korea was hosting the G20 in 2010. So B20 does not have any separate secretariat. So any country that holds this G20 presidency also hosts this B20 conference in rotation. So around 100 business representatives from G20 countries participate in this. So the next topic is UN Social Development Commission. This topic is important for your international relations. The UN Commission for Social Development has recently elected India's permanent representative to the United Nations, Yurujara Kambodji, as its chair for the 62nd session. So if we look at UN Social Development Commission, then this is also known as the Social Commission, and it has been in existence since the very inception of United Nations. It advises the UN ECOSOC and even member governments on social policy issues, and also on the perspective of or on the social perspective of development. So originally it had 18 members, but now its membership stands at 46. Members are elected by the ECOSOC, and it has equitable geographical distribution for 4-year terms. So the next topic is Verco software. This topic is important for your science and tech section. Researchers have recently developed an innovative software called Verco, which will assemble truly complete gapless genome sequences from a variety of species. So it's an innovative software developed by National Institutes of Health, US, and how it would be working. So you know that whenever we are sequencing DNA, these DNA are sometimes very small and high. Sometimes we get the high detailed sequencing of the DNAs, but this Verco will start putting together all the small and detailed pieces so as to reach an accurate and complete genome sequence. So it will basically make this entire process of genome sequencing very affordable and accessible.
So the next topic is ValueLink. This topic is important for your security section. Indian Air Force has recently developed an indigenous ValueLink platform, which will be providing jammer-proof communication with the base station to the Indian Air Force aircrafts. So yeah, it will be an ad hoc data link communication system, and it will be using the IRNSS to send radio communication among the base station and even when the signals are very low. So ValueLink will give the position of other aircraft which is flying close by in a encrypted traffic data over a secure channel. So which will help you to prevent fratricide, because otherwise you would not be knowing which plane is flying nearby. So pilots should not be uh, having the pilots would prevent each other from engaging with each other or in a combat. So it will basically provide better combat teaming. It will also help them to prepare on real or prepare or plan on a real time basis. It will also give the pilots data on the weather. So the next topic is Sukhoi Superjet 100. This topic is important for your international relations, economy, and security both. All. So Russia has recently proposed to manufacture its Sukhoi Superjet civil aircraft in India. It is manufactured by Sukhoi JSC. Otherwise, it has a maximum cruise speed of Mach 0.81, and it made its maiden flight in 2008. So the next topic is Suraj drone. This topic is important for your science and tech section. So recently, Garuda Aerospace has displayed solar-powered drone Suraj at Aero India 2023. It is a solar-powered drone which is designed specifically for surveillance operations. It will also have artificial intelligence, machine learning, and bionic chip capabilities. It will have a maximum capacity of 10 kgs. So the next topic is a finder device. This topic is important for your science and tech section. NASA has recently developed a technology which can remotely detect the tiniest motions of the body, which will be used to identify disaster relief team, which will be used to identify survivors by the disaster relief teams who are working in Turkey. So it is designed to even detect a human heartbeat, which is buried beneath as deep as 30 feet of rubble. So it will be able to identify the human heartbeats and even the respirations using the microwave technology. Okay. So the next topic is Shinkula Tunnel. This topic is important for our economy section. Union Cabinet has recently given its nod for the construction of Shinkula Tunnel so that we can have all-weather connectivity to the border areas of Ladakh. It will be constructed at an altitude of 16,500 feet over the Nimu Padam Garcha road link, which is on the border between Ladakh and Himachal Pradesh. BRO will be constructing this road. It will provide all-weather connectivity to Ladakh, and in case required, we will have swift movement of troops and heavy weaponry to forward areas through this tunnel. So the next topic is rhododendrons. This topic is important for our environment section. The latest publication of Botanical Survey of India has revealed that Darjeeling and Sikkim, these two areas account for more than 1/3 of rhododendrons which are found in India. So rhododendrons generally have 1,000 species of flowering plants. They are found in temperate regions of Asia, North America, and Europe, and they are having enormous diversity. They are also known as lali guras in local language, and it is also the national flower of Nepal. And if in India, it is the state tree of Uttarakhand. So the next topic is Sagar Parikrama Phase 2. This topic is important for your economy section. Ministry of Fisheries has stated that Sagar Parikrama Phase 2 would be, Phase 3 would be starting from Surat, Gujarat's Hazira port. So basically, it's an initiative to resolve the issues of fishers and other stakeholders and facilitate their economic upliftment. So what happens here is that the state fisheries official, fishermen representatives, etc., they go for a in the coastal areas of these states, and they engage with these coastal communities, fishermen communities, so as to resolve their issues. So this phase would be covering the coastal states of Maharashtra, coastal areas of Maharashtra and Gujarat. So the next topic is Gorakhpur Nuclear Power Plant. This topic is important for our science and tech section. Government is planning to set up India's first nuclear plant in
Haryana, which will be set up at Fatehabad district of Haryana. It will have two units of 700 megawatts each of a pressurized heavy water reactor, which will be indigenously designed. So, what is pressurized heavy water reactor? It uses an enriched natural uranium as its fuel, and it also uses heavy water, that is the deuterium oxide, as its coolant and moderator. Using heavy water enhances the ability of the reactor to make full use of the alternate fuel cycles whenever the nuclear power plant is operating. So the next topic is Yakshagan. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently expressed deep grief over the demise of noted Yakshagan playback singer Shri Balipa Narayan Bhagwat. So Yakshagan is a traditional folk dance form of Karnataka, coastal Karnataka rather. It is a rare combination of dance, music, and song, which involves 15 to 20 actors and a Bhagwat, who is the main storyteller. It generally involves stories from Hindu epics of Ramayana and Mahabharata, and the musical instruments used in Yakshagan include chande, harmonium, malale, tala, and flute. So even the costumes which are used in Yakshagan are very unique and elaborate. So the next topic is Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar. This topic is important for your art and culture section. Recently, Union Minister for Culture has presented the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar at Meghdoot Theatre Complex in New Delhi. So it is given to artists up to the age of 40 years who have made certain contributions to the music, dance, and drama, and is presented annually rather. And this award is presented by Sangeet Natak Academy, and the nodal ministry is Ministry of Culture. So who was Ustad Bismillah Khan? You know that he was a famous Shehnai musician who played at the first Republic Day of India in 1950. And if we look at Sangeet Natak Academy, then it is India's National Academy of Music, Dance and Drama, and it was created by a resolution of Ministry of Education. Currently, it is under the Ministry of Culture as an autonomous body. So the next topic is Chhatrapati Shivaji Maharaj. This topic is important for your art and culture section. So recently, PM Modi has paid homage to Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Jayanti. He was the founder of Maratha Kingdom, and he was born as in 1630, and he is also known as the father of Indian Navy because he realized the importance of having a naval force. He was a secular ruler, and he was accommodating towards all religion. He was a dependable supporter of women also, and he had a council of ministers called Ashtapradhan. He was also called the Mountain Rat because of his widely known guerrilla warfare tactics and his awareness of geography of his lands. He was very famous for the surprise attacks on his enemies, ambushing and raiding. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.